कनाडा की टोरंटो पुलिस को भारी कामयाबी मिली है। 9 पंजाबियों समेत पकड़े गए 18 लोगों से कनाडा की पुलिस की ओर से हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक इतिहास में यह सबसे बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। जानकारी के मुताबिक कैनेडियन पंजाबी पोस्ट ने 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किए जाने की बात की है, जिसमें 9 पंजाबी मूल के हैं। पुलिस प्रमुख जेम्स रैमर ने संवाददाताओं से कहा कि इस जांच के नतीजे अभूतपूर्व हैं। पुलिस के मुताबिक तस्कर ट्रैक्टर ट्रालियों का इस्तेमाल करते थे और नशीले पदार्थों की तस्करी करते थे। महामारी के चलते बंद की गई सीमाओं से कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। इसी के रास्ते नशे की सप्लाई हो रही थी। ट्रालियों में नशीली दवाओं को छिपाने के लिए विशेष तौर पर हाइड्रोलिक ट्रैप बनाए गए थे। एक जाल का इस्तेमाल किया जाता था। एक चक्कर में 100 किलोग्राम तक के नशीले पदार्थ तस्करी करके लाए जाते थे। इस दवा की अनुमानित कीमत $61 मिलियन बताई जा रही है। कनाडा की ओर से पुलिस की ओर से बताया गया कि पूरे कनाडा में 35 तलाशी वारंट जारी किए गए थे और 182 आरोप दायर किए गए थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक नाबालिग भी है। पुलिस के अनुसार जब्त की गई इस ड्रग्स में 444 किलोग्राम कोकीन, 182 किलोग्राम क्रिस्टल मैथ, 427 किलोग्राम भांग, 300 किलोग्राम ऑक्सीकोडोन गोलियां, 9,66,020 C9 ट्रैक्टर ट्रालियां और एक हथियार समेत 21 वाहन भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए पंजाबियों के नाम जो बताए जा रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि महिला है 48 वर्षीय, ये कैलेडॉन की रहने वाली है। हरविंदर भुल्लर उसका नाम है। अमरबीर सिंह सरकारिया, हरजीत सिंह, ब्रम्पटन के 37 वर्षीय गुरबख्श सिंह, सुखवंत बराड़, परमिंदर सिंह गिल, किचनर के सरजन सिंह धालीवाल, गुरवीर सिंह धालीवाल, गुरमनप्रीत सिंह धालीवाल, गुरमनप्रीत सिंह गरेवाल शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस की ओर से जांच की जा रही है कि आखिर ये लोग कब से इस कारोबार में शामिल हैं और इन्होंने कितनी संपत्तियां अर्जित की हैं। I'm pleased to be accompanied by my friends and colleagues in law enforcement to share the results of Project Brissa, a joint forces effort which was led by the Toronto Police Service Drug Squad in partnership with the Asian Organized Crime Task Force, the Ontario Provincial Police, York Regional Police, and Canada Border Services Agency, each of which are represented here today. All were essential to the success of this operation. Through funding provided by the Government of Ontario, Criminal Intelligence Service Ontario, it's supported the Toronto Police Service's joint investigation. Project Brissa was conducted over a 7-month period, beginning in November of 2020, and led to the largest international drug takedown in our service's history. The quantities of illegal street drugs seized in the operation are frankly staggering. Let me be clear. The size and scope of this investigation in terms of drugs seized and potential harm caused has never been seen before in the history of our service. To my knowledge, this is the first time we've conducted a media briefing such as this outdoors, enabled to be able to display the magnitude of what was seized. The removal of this quantity of drugs destined for the streets of our respective communities has without question prevented countless overdoses, acts of drug-related violence like shootings and other occurrences that diminish the quality of life for our citizens. The investigation focused on high-level importation and distribution of cocaine and methamphetamine, which investigators believe originated in Mexico and made its way to Canada through the United States. Tractor trailers equipped with traps capable of smuggling up to 100 kilograms of illicit substances at a time were used. As you can see, the results of this investigation are unprecedented and include the seizure of over 1,000 kilograms of illicit drugs. And let me repeat that, over 1,000 kilograms of illicit drugs and nearly $1 million in cash. These seizures diverted millions and millions of dollars in drug profits from organized criminals who chose to put personal profits ahead of the well-being of our communities, our colleagues, our friends, and our neighbors. The social cost that this amount of illicit drugs inflicts on society is immeasurable. 35 search warrants were executed across the country. 20 people have been arrested, including one youth,
and there are 2 parties outstanding, and their pictures are behind me. The accused persons collectively face 182 charges. We work closely with our partners not only here in Canada, but also in the United States, including the U.S. Department of Homeland Security and the U.S. Drug Enforcement Agency, to whom I extend our gratitude. I would also like to acknowledge and thank the RCMP, Windsor Police Service, Montreal Police, and FinTrack for their assistance in Project Brissa, which uncovered what we alleged to be criminal connections stretching from Vancouver to Halifax domestically and throughout the U.S. and into Mexico. As policing continues to evolve, and we seek better ways to address community safety and quality of life issues, I cannot stress enough the importance of partnerships and collaboration. This investigation was strategic, it was intelligence-led, and was carried out in a manner that focused on preventing harm and improving community safety and well-being. What we see before you is the direct result of the extreme dedication of our investigators and their countless support staff. I wish to thank all of our law enforcement partners, the men and women of the Toronto Police Service, and the members of the Drug Squad for their tireless dedication and their truly remarkable contribution to community safety. The names of arrested persons and associated charges will be made available for reference as part of the published news release. Thank you.